एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि आपको पता है, आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और हम सभी टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। अब दौर शुरू हो चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सो बिफोर लीडिंग टू द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटेलिजेंस। द एबिलिटी टू लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स और थिंकिंग पावर। और एआई दो शब्दों को मिलाकर बना है, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड और इंटेलिजेंस का मतलब थिंकिंग पावर। हैंस एआई मीन्स a man-made thinking power. So we can define AI as it is a branch of computer science by which we can create intelligent machines which can behave like human, think like humans, and able to make decisions. So here are some examples of artificial intelligence like virtual assistant, self-driving cars, Google Maps, face detection and recognition, text editors or autocorrect, search and recommendation algorithms, chatbots, social media, and e-payments. हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू जो पहला कंप्यूटर बना था, उसका काम था जर्मन कम्युनिकेशंस को ब्रेक करना, और इस कंप्यूटर को बनाने में एलान ट्यूरिंग का बहुत मेजर रोल था। और 1950 में एलान ट्यूरिंग ने ही एक कॉन्फ्रेंस में एक पेपर पब्लिश किया और उसकी हेडिंग थी कैन मशीन्स थिंक। उसके बाद 1955 में लॉजिक थ्योरिस्ट प्रोग्राम को निवल और साइमन ने डिज़ाइन किया और इसे एआई का पहला प्रोग्राम माना जाता है। और 1956 में अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी, जिन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, उन्होंने डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में इस टेक्नोलॉजी का एक नाम दिया जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। Applications of artificial intelligence. So here are some sectors which have the application of artificial intelligence like astronomy, healthcare, gaming, finance, data security, social media, data and transport, automotive industry, robotics, entertainment, agriculture, e-commerce and education. Why artificial intelligence? With the help of artificial intelligence, you can create such software or devices which can solve real world problems very easily and with accuracy, such as health issues, marketing, traffic issues, etc. And also with the help of AI, you can create your personal virtual assistant like Cortana, Google Assistant, Siri, Alexa, and also with the help of AI, you can build such robots which can work in an environment where survival of human can be at risk. Also, AI opens a path for other new technologies, new devices, and new opportunities. Goals of artificial intelligence. So here are the some main goals of artificial intelligence, like replicate human intelligence, solve knowledge intensive tasks, building a machine which can perform tasks that requires human intelligence, creating some system which can exhibit intelligent behavior, learn new things by itself, demonstrate, explain, and can advise to its users. Advantages of artificial intelligence. So here are some main advantages of artificial intelligence. High accuracy with less errors. Next we have high speed. So AI system can be very high speed and fast decision making. Because of that, AI system can beat a chess champion in the chess game. Next we have high reliability. AI machines are highly reliable and can perform the same action multiple times with high accuracy. Useful for risky areas. Like AI machine can be helpful in situations such as defusing a bomb. Digital assistant. Artificial intelligence can be very useful to provide digital assistant to the users, such as artificial intelligence technology is currently used by various e-commerce websites to show the products as per customer requirement. Useful as public utility. Artificial intelligence can be very useful for public utilities such as a self-driving car, which can make our journey safer and hassle free. Facial recognition for security purpose.
natural language processing to communicate with the human in human language, etc. Disadvantages of artificial intelligence: high cost, can't think out of the box, no feelings and emotions, increased dependency on machines, no original creativity.